If I got into Amazon directly, it would have been very overwhelming for me. इतने पहले इतना कुछ एक साथ सीखना would have been a bit overwhelming for me personally. I would say teachers shaped me for that journey. But ऐसे होता था कि मान लीजिए कि ऑफिस से वापस आ रहे सोचे कि 2 घंटा स्पेंड करेंगे, कभी नहीं होता था. That's a very good trick. I used to do that too. I would say this: getting the resume shortlist is the most difficult part. Initially, I used to apply like to many companies via the Careers portal, and honestly speaking, I did not receive a response from any of them. So if you can go back to your first year of engineering, what would you do differently? काश IIT के लिए पढ़ लेते थोड़ा. एक टियर 3 कॉलेज में आके या TCS जैसी किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में आके आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आपकी लाइफ स्टार्ट होती है. इसी का एक रियल लाइफ एग्जांपल है सप्तर्षि दे, हु इज नाउ वर्किंग एट Amazon एज एन SD2. इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी बातें की हैं उनसे कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे रही, कैसे उन्होंने Amazon में अप्लाई किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, उनका कॉलेज का और TCS का एक्सपीरियंस कैसे रहा, वो सब हमने इसमें डिस्कस किया है. आइए आप खुद ही सुन लीजिए. बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ. तो जल्दी से सब्सक्राइब दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो. So hi Saptarshi, first of all welcome to the Code School. And आप एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हैं अपने बारे में ऑडियंस के लिए. Hi to anyone who is watching this video. So basically, I'm a 2019 grad. Did my BTech CSE from a private university in West Bengal, UEM Calcutta, and from there I got into TCS. Worked there for 2 years and then moved over to Amazon. It's like again 2 years back during the COVID. I got into Amazon as an SD1 and then I got promoted. So currently I'm working as an SD2 in the AWS team. So सप्तर्षि, how was your college? जब आप कॉलेज में गए तो कॉलेज में कैसा कोडिंग का कल्चर कैसा था कि बाकी लोग भी कोडिंग करते थे, और आपने फिर कैसे कोडिंग स्टार्ट किया वहाँ पे? हाँ, तो हमारा कॉलेज जो था वो आपका प्राइमरीली इट वाज मोर इनटू रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, या फिर आपका मान लीजिए ऐप डेव वेब, उसका कल्चर बहुत सही था. बट कोडिंग जो आपका PSL को बेस्ड जो कोडिंग है, लाइक प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू और कंपेटिटिव कोडिंग, दैट वाज नॉट मच देयर. सो उसमें लाइक वी वर एक्सपोज टुवर्ड्स की रिसर्च प्रोजेक्ट कुछ रिसर्च पेपर बना लेते हैं, या फिर आपका मान लीजिए कुछ ऐप बना लिया. एक आध बनाए थे तब, बट गॉट लाइक लॉस्ट द टच. बट या वर्क ऑन दैट. बट कोडिंग प्राइमरीली कोडिंग वाज मोर इनटू की सिलेबस बेस्ड कोडिंग and not much competitive coding or DSA focused coding. I primarily was like कि कोडिंग पता था, DSL को भी थोड़ा बहुत कर लिए थे, बट इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलर नहीं चाहिए, वो एक्सपीरियंस नहीं था. देन आपका जो फर्स्ट जॉब ऑफर आपको मिला TCS में, तो वो कैसे हुआ? TCS आपकी कैंपस पे आई थी और कैसे उन लोगों ने सेलेक्ट किया आपको? हाँ, तो TCS में ऐसा था कि जो एक इफ यू रिमेंबर, आई थिंक दैट वाज आई पास इन 2019, so we had a placements in somewhere 18. So back then TCS started the hiring drive for Ninja hiring drive, and students from our colleges also got an invite to be a part of that hiring drive. So we went to the TCS facility to give that online exam. So उसमें आपका Ninja होता था. फिर it was like one like written test. Then there was an interview. And if you are lucky enough to get into the something, there was some percentile, I don't remember, 80 or something, some sort of percentile. If you're beyond that, you get an invite for the digital call. I had my Ninja interview cleared, the written exam cleared. Then I got the interview cleared, got a shortlist for digital, but could not crack the interview for the digital profile. So it was like, yeah, that's how more or less it happened. So your first job was at TCS. So आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा? वर्क कल्चर आपको कैसा लगा, और क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं सीखी? क्योंकि फर्स्ट जॉब में जनरली काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो क्या क्या वहाँ पे मिला और कैसा वर्क कल्चर लगा? Sure. So इसमें आपका like TCS was the first job, and like उसमें the most important piece that we learned is कि how to work in a office environment. So like keeping that aside, I think the most important thing was I luckily got a test project. So like in TCS what happens is either you get a support project or you get a development project. I think in a development project it's more about like the usual Java work or some front end work. But if you get into support project, it's not that much of a growth that resides in there. I mean, as I was ending my 4th year and getting into college, I did work on a couple of projects, but the entire understanding of full stack, like ये front end होता है, ये back end होता है, बीच में DB होते हैं, तीन अलग अलग सर्वर पे रिसेट कर सकते हैं, and फिर भी they are connected. That entire ecosystem, I knew these pieces independently, but how they connect is what I understood in my job over there. I was a part of the back-end development team. If I speak about the particular tech skills, so I got to learn कि आपका लाइक जावा के एकदम लाइक जावा तो हम लोग सब किए हैं पहले, बट एक्चुअली ऑफिस एनवायरनमेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में कैसे कोड क्वालिटी होना चाहिए,
उसमें आपका कि कैसे what is the CR, what is the pull request, what is the change request, raising that, getting comments. So it was like all of that कि आपको merge करवाना है. I still remember the first time I faced a merge conflict. Like resolving it was actually a learning. Then we read about SQLs in the college, DBs, everything, but उसके actual implementation I got to know that. So I would say it was the learning curve was going well. At some point in time where I felt कि learning अभी थोड़ा वो हो गया, stagnant has kind of reached like stability. मतलब I wouldn't call it stability, but it has got stagnant. तो उसके बाद is where it gradually thought of कि चलो कुछ और सोचते हैं. And so yeah, ऐसा I think it's very interesting. Generally लोगों को लगता है that if you get into TCS you don't get to do anything, you don't get to learn anything. But जैसा आपने बताया कि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली. I think किसी स्टार्टअप में जाएंगे तो भी सेम ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं, right? Like all the databases, back end, front end, exactly same आपको वहाँ पे सीखने को मिला. So this is very new information for the audience, I think. I think the best part is कि ना मतलब I think in this way, like if I got into Amazon directly, it would have been very overwhelming for me. इतने पहले इतना कुछ एक साथ सीखना would have been a bit overwhelming for me personally. Someone else might have been able to adjust to that. So I felt कि जो stepping stone है कि पहले I got into TCS, learned what an office environment is all about, कि इसमें काम कैसे करते हैं. हमको सबको पता था कि प्रोजेक्ट करते हैं, बट प्रोजेक्ट में होता क्या है कि what do we do in a project. So that is what I learned कि मतलब ऐसे होता है ना भैया बहन कि उन लोग बताते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट करता हूँ उस कंपनी में. तब मेरा सवाल होता है तुम आप करते क्या हो वहाँ पे. तो वही उसको पूरा समझना उस कल्चर में, गेटिंग माइसेल्फ इनटू दैट कल्चर. देन टाइमलाइंस का कंसेप्ट आ जाता है कि तुमको इसमें डालना है वरना तुमको हाथ खाना है. ऑब्वियसली मतलब वो सब एक कल्चर मतलब आई थिंक जो छार का कंसेप्ट है ना इसमें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दे वोंट मतलब स्कोल्ड यू, बट इट्स लाइक कि तुमको अपने आप से आ जाता है कि अगर नहीं करते हैं ना तो कुछ तो होने वाला है. Actually, exactly that transition from a college student to a professional developer or a office environment. So that is very new to us, right? कि काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ सीखना होता है. Absolutely, and that's what TCS I would say TCS shaped me for that journey. I mean पूरा professional journey के लिए it shaped me आपकी like calls attend करना, client calls attend करना, उसमें कैसे बताना है, कैसे present करने, कितना बताना है, कितना मतलब information abstract करना है, वो सारी चीज़ I think मतलब I think anyone could have learned in any other company or any other job, but for me I felt it as the growth happened gradually I was able to like get used to that very easily is what I personally felt. Great. Yeah, and coming to that, so आपने बताया कि then your growth kind of stagnated. So then how did you decide to switch to other companies, and how did you start preparing for that? So यहाँ पे like I wouldn't say this, but COVID was my lucky chance. So it in a way gave me time to, I mean it was a very bad, I mean I would definitely say COVID का time was very stressful for all of us, but time wise we did see like we all got some like time to spend on ourselves कि कुछ करते हैं ना कुछ. I think even you started your YouTube channel during this COVID period, right? Exactly, yeah. We all got something or the other during this, like कुछ time मिल गया, कुछ तो करते invest करते हैं. So for the preparation मैंने बहुत बार पहले भी ट्राई किए थे. मतलब लाइक होता है ना कि DSL को फिर इंटरव्यू के लिए नहीं, बस ऐसे DSL को लीड कोर्स से कहीं से प्रिपेयर करने के लिए करते थे. बट ऐसे होता था कि मान लीजिए कि ऑफिस से वापस आ गए, सोचे कि 2 घंटा स्पेंड करेंगे. कभी नहीं होता था कि एक दिन वीकेंड पे हो गया, या फिर आप मान लीजिए एक आध दिन वीक पे भी हो गया, बट उसके बाद इट्स लाइक कि चलो बहुत हो गया, अब तो सोना है, अब तो फिर घूमने जाना है. तो वैसे करके कभी नहीं, मतलब फ्राइडे तो बात ही अलग है. तो स्टार्टिंग में स्टार्टेड अ कपल ऑफ टाइम, देन आई लाइक चलो हो गया. उसके बाद एज ग्रेजुअली आई स्टार्टेड स्टेइंग बैक एट होम ड्यूरिंग द कोविड, एंड माई फर्स्ट कंपनी आई मीन TCS वाज बैक इन कैलकाटा. मैं होम टाउन, तो घर भी आते थे, खाना पीने कुछ का प्रॉब्लम नहीं था. मम्मी आ जाते थे, खाना दे देते, मतलब खाना मम्मी तो मिल जाता, सब कुछ. मतलब आई हैड नो अदर वर्क टू डू अपार्ट फ्रॉम माई जॉब. उस टाइम आई स्टार्टेड फोकसिंग इनटू दिस एंटायर लर्निंग अबाउट एग्जैक्टली व्हाट फैंग इंटरव्यू एंटेल्स, कि उसमें होता क्या है. आई न्यू कि DSL को पूछा जाता है, वो तो सबको ही पता होता है कि हाँ DSL को पूछना है, या फिर पूछेगा, या फिर आप मान लीजिए कि कुछ भी मतलब हायरिंग मैनेजर का राउंड होगा. बट एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे आई थिंक वी ऑल न्यू कि ग्राफ इज अ सब टॉपिक दैट जिस कॉलेज में पढ़ाए जाते थे, TFS BFS है, और उसका एप्लीकेशन की नंबर ऑफ आइलैंड इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ. वी डिड नॉट नो, वी ऑल न्यू DFS BFS, बट वी नेवर न्यू हाउ टू सॉल्व अ नंबर ऑफ आइलैंड प्रॉब्लम विद इन दैट सेम एल्गोरिथम.
and I think that's where I spent more time into. I actually started learning about each topics, and then उसके बाद की क्या क्या important problems है, and gradually that I got into the habit of practicing. So all of that, yeah. I think, yeah, and I think this is with channels like yours and everyone who is putting in so much time into, I mean, the like encouraging the younger generation to get into FANG companies or helping them prepare for that is what is definitely a great resource for anyone who is currently preparing for their interviews, upcoming interviews. So, yeah. Thank you so much. And apart from these channels, so which other resources did you use exactly for preparing, like Lead Code or Geeks for Geeks? Which website did you prefer? Great. So I think that's a very great question. I think your audience will definitely help a lot, get benefits out of this. So I started with Geeks for Geeks. So what I used to do was I took a topic. I watched some videos over YouTube, like some of the famous problems, like जैसे ग्राफ में आपका नंबर ऑफ आइलैंड्स हो गया. Went through the videos and then started solving the problem because I knew like खाली ग्राफ टॉपिक पढ़ने से हमको उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा before I actually start doing that. Like it will be like कि I look at the problem, I look at the solution. Intuitiveness, I think it will only work when you know what some of the important problem that has already how they have been solved. So yeah, that's how it all began. So I started watching the YouTube videos, and then Geeks for Geeks went through some of the problems. I kept writing notes. So every other problem, if topics, I started writing notes, documenting it, and then post that I worked upon graph complete हो गया. I then went to Lead Code and started doing the problems, and I had my notes handy. कुछ रेफर करने तो उसमें रेफर कर लेते थे, या फिर इवन ऑन लीड कोड आप मान लीजिए कि 5 प्रॉब्लम है, मैं और 10 सॉल्व किया, उसमें 2 प्रॉब्लम लग रहा है कि ये इसमें है नहीं कि इट्स नॉट वेरी सिमिलर टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी लर्न. आई टुक अ नोट ऑफ दैट कि इस क्वेश्चन है, इस साइट है, एंड अ ब्रीफ one or two ब्रीफ सॉल्यूशन की पूरा एक आध लाइन का एल्गोरिथम. या दैट्स इट. yeah I think that's a very good trick. I used to do that too. Like अगर किसी प्रॉब्लम में लगे कुछ ऐसा एक चीज जो हमें याद रखनी है जब लाइक रिवीजन करेंगे या देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो एक ट्रिक होता है ना, कई बार एक ट्रिक होता है कि हाँ ये लिख के रख लेते हैं तो वो हमेशा फिर ये सॉल्व होगा. हाँ श्योर. एंड आई थिंक वो इंट्यूटिवनेस से आएगा ही नहीं, वो थोड़ा मतलब इट्स काइंड ऑफ रिकलेक्टिंग हाउ यू हैव सॉल्व्ड द प्रीवियस प्रॉब्लम. इट वोंट बी इंट्यूटिव. वो कुछ होता है मतलब पढ़ के जिसने पढ़ा है वही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा. हाँ वही कर सकते. एब्सोल्युटली. देन उसके बाद आपने अप्लाई करना कैसे स्टार्ट किया? सो लाइक आपको कभी प्रॉब्लम्स फेस नहीं हुई, मे बी बिकॉज ऑफ योर कॉलेज दे रिजेक्टेड यू, और योर लाइक कंपनी में भी लाइक people have this conception that FANG maybe does not hire from, let's say, TCS or service-based companies like this. Okay, so आपको ऐसा कभी फील हुआ कि इसकी वजह से आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हुआ है, या कैसे आपने फिर अप्लाई किया? That's again a great question. So it's like कि I would say this. Getting the resume shortlist is the most difficult part. Once you cross that barrier, they won't judge you on your college. They actually won't. It's how you perform there is what will help you get the job. Like even a person from IIT, if it does not perform well, he won't get the job. But even a person from a tier 2 private university, if he performs great, even better than the IIT person, he will get that job. So like resume shortlisting, that filtration criteria, I think that even makes some sort of a sense for the company to have some layer of filtering. But yeah, and that's where I think referral works. So if you have a referral if you know someone, to ask them for a referral. And I got to know about this much later in the game. So initially I used to apply like to many companies via the careers portal, and honestly speaking, I did not receive a response from any of them. Even it did not work with referrals as well. So in some cases कि मैंने referral से भी apply किया था, तब भी नहीं मिला था. But I did had the thought कि मिल तो सकता है ना इसमें. वो एक होप था क्या, like there is a possibility that I can get one via the referrals. वो possibility improve हो जाता है. So what I would suggest to anyone is कि if you want, you can apply directly, but I think the probability will increase if you know someone. And I think in this age of LinkedIn and people trying to help out the community, I think you will find someone or the other who is willing to give you a referral for any company. The simplest art is go ahead and drop the message. That's it. बस मैसेज डाल दो किसी को कि I am working, I mean this is my resume and just go ahead and apply. I would want to apply. This is the job link. आप मुझे रेफर कर दीजिए if we have an opening available.
एक मैसेज टेम्पलेट बना के रखना हाँ, चाहिए, बस बिल्कुल। उसमें रिप्लेस कर दो हाँ, कंपनी का नाम और उसका नाम, एम्प्लॉय का नाम और जॉब आई, हाँ, सबको वो भेज दो। true, 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 true. वो भी चैट Very जीपीटी true, से very लिखवा true. लो, I वो भी think चैट जीपीटी से लिखवा लो मैसेज टेम्पलेट पे। अब तो चैट जीपीटी है ही, अब तो चैट जीपीटी है अपने दोस्त, सब कुछ करवा देगा। And how was your experience? Like how many rounds did you have and what level of questions did they ask? So, as it goes with Amazon, like they have one, either you have the OA or the phone screen assessment, or maybe both in some cases. I had the first round post resume shortlisting was I got a call from the interviewer, the recruiter. They said that कि एक तुम्हारा phone assessment होने वाला है, phone screen round rather. तो उसमें खाली ऑडियो रहता है, मतलब इट्स नॉट द वीडियो, दे ओनली कनेक्ट यू ओवर अ वीडियो, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल, एंड दे हैव जस्ट दी ऑडियो एनेबल्ड, एंड एक कोड लिंक शेयर कर दिया जाता है कि जिसमें कोड करना है तुमको, where the both the interviewer as well as you can access whatever you are writing on the board. So they will evaluate it real time. उन लोग कोड रन करके नहीं देखते, बट उन लोग रियल टाइम इवेल्युएट करते हैं कि तुम्हारे सिंटैक्स सही है या नहीं, तुम्हारे उन लोग के पास सोल्यूशन पहले रहता है, so they know what is the actual solution, what the code, what needs to be written, so they compare that with what you have written. Like not exactly, it can be exactly the same, but the logic still remains the same in whatever language you code or whatever, however you try to write that code. So they ask you verifying questions, how did you, मतलब if you if you actually have thought to the entire process, इसको deep dive कैसे करेंगे या फिर try run कैसे करेंगे, just some questions around that, and a few LP questions. That was the phone stand round. The question was a DSL question, and it was around trees. So post that, and there was another question around the double linked list, hash map double linked list, something on that line. Post that, I had 4 follow-up rounds for the main interview. There were 4 rounds. 3 of them were into PS Algo, and last was the hiring manager round. All of them had some sort of LP questions, the leadership principal questions asked. तो हर एक राउंड में उन लोग स्टार्ट करते थे कि कुछ LP से स्टार्ट कर लिए, या फिर बाद में एट द एंड फिर LP क्वेश्चंस. तो उसमें आप मान लीजिए कि हाउ डिड यू, लाइक अ सैम्पल LP क्वेश्चन विच यू विल सी एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट, की क्रिटिकल फीडबैक रिसीव करोगे तो क्या होगा, या फिर मतलब क्वेश्चन ऑन दिस लाइन इज व्हाट दे आस्क इन दैट राउंड, तो फिर क्रिटिकल फीडबैक रिसीव करोगे तो क्या होगा, हाउ वुड यू इम्प्रूव टीम बॉन्डिंग, लाइक Did you have any disagreement? Did you have any disagreement with your manager? How did you resolve it? This kind of thing. they try to put you in difficult places and see how you react to that at real time. That's what the motivation is, कि उन लोग के कल्चर से हम लोग मतलब if we are aligned with what their culture is, कि उन लोग जहाँ पे if will people fit into that particular company where. So that was around the LP questions. And DSL को मैं it was normal, like कि आपका पहले राउंड में I had a question around the graphs. There was a question around graphs, and there were a couple of follow-up questions. And then एक में I had, in some of the round I had questions around the what do you call it, the hash maps, linked list. So I did not receive any TP questions, but apart from that all the areas was primarily covered, कि priority क्यों आ गया आपका उसमें, फिर आपका heaps आ गया, फिर arrays, string, everything was covered in some way or the other. And the last round was around कि mostly आपका उसमें hiring manager, जैसे but the hiring manager round for me was, it did not have a coding question, but it had some designing sort of a questions. It wasn't exactly L&D or HLD question, but उसमें ऐसा था कि तुमने पहले प्रोजेक्ट में किस में काम, पहले कंपनी में किस प्रोजेक्ट में काम किया, and they started talking about it. He said कि तो इसमें like इसमें what design principles did you implement, कि scalable, इसको scalable कैसे करोगे, इसको available कैसे करोगे, all those 4 designing like pieces were touched. तो उसमें I had to explain कि ऐसे किए थे, ऐसे किए थे. तो it was more about my resume, but he went deep dive into each like project that we were discussing. So उसमें थोड़ा था, and so LP का आपका normal तो होगा ही. I think the hiring managers mostly try to see कि आपने actually काम किया है या नहीं किया, मतलब तुमने ऐसे तो नहीं project लिख दिया. So they asked like counter questions कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों. Intriguing question. हाँ. कि how did you do that, और what was your role into that. like हम लोग बता देते हैं ना कि टीम में हम लोग किए थे, कि टीम में कितने जन थे, तुम्हारा रोल एग्जैक्टली क्या था, what did you deliver, what was your impact. So that's what they try to focus on, कि what was your contribution to that project. हाँ,
रैंडम किसी ने तो कुछ लिख नहीं दिया कि टीम में चल रहा था कुछ, हमने भी लिख दिया वो। इसीलिए कुछ भी झूठ नहीं लिखना चाहिए रिज्यूमे में कि हाँ मैंने मशीन लर्निंग के थ्रू एक ऐप बना दी थी। कुछ भी लोग लिख देते हैं, वो नहीं लिख। Absolutely. Like we should write whatever we know, and even if you want, we can trim certain pieces. कितना अच्छे पता नहीं तो हटा ही दो. What I feel like company does not want to see कि तुम कितना कुछ किए हो. They want to see तुम जितना क्यों अच्छे से किए हो ना. That's all they want to see. कि तुमने और तुम हमारे यहाँ ओनरशिप पे लिया है, काम कर तुमने उसमें कितना काम किया है उसमें जो तुमने and make you there. राइट। Yeah. सो दैट वाज द लास्ट राउंड, मतलब मोस्टली Yeah. डीएसए के बेस पे ही इंटरव्यू रहा, बट विद लाइक सम डिजाइन पार्ट। Yeah, so that's the last question. So the most interesting question, I think. So if you can go back to your first year of engineering, what would you do differently? Oh, it's about time travel. And I think we all think about it. We all have thought about it somewhere during our years कि चलो कॉलेज के बाद जब कॉलेज में आ गए थे तब मानता वैसे सोचते ही होंगे काश IIT के लिए पढ़ लेते थोड़ा, काश मतलब थोड़ा तब वो हो जाता कि पढ़ाई कर लिए होते, तो ये एक थॉट हमेशा रहता है. बट आई थिंक लाइक ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट एज वाज आस्क्ड दैट क्वेश्चन, आई थिंक व्हाट पर्सनली आई वुड हैव डन डिफरेंट, I would have tried to balance my DSA algo skills apart from the research and the after which I've been already doing. So I think ऐसा होता है ना कभी कभार कि हमको DSA algo we need to learn DSA algo to get a job. बट बाकी रिसर्च हो गया एक्टिव हो गया वो अपने पैशन के लिए अच्छा लगता है इसलिए करते हैं. तो आई थिंक वी शुड नॉट लीव आउट एनी ऑफ इट का. अगर आपका पैशन कंप्यूटर कोडिंग में है तो बहुत सही, फिर आप पूरे ही DSA algo में इन्वेस्ट कर दीजिए, वरना आप उसको स्प्लिट कर दीजिए. एंड लाइक मैनी पीपल आई हैव हर्ड मैनी पीपल से कि कॉलेज के 4 ईयर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या ही करे. आई थिंक वी शुड ट्राई टू बैलेंस ऑल ऑफ दी पीसेस कि उसमें कुछ तो सीख रहे हैं ना क्लास में जाकर, एटलीस्ट वी आर बीइंग डिसिप्लिन्ड. बैठ तो रहे ना इतने घंटे, 6 घंटे 7 घंटे ऑफिस में, वही तो करना पड़ता है. तो आई थिंक वी शुड अटेंड द कॉलेजेस. बट हाँ एक पॉइंट है कि हर रोज़ जाना है, नहीं हर रोज़ नहीं जाना है. आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन कि हर रोज़ जाओ, जितने जाना है जाओ, एग्जाम डिलीजेंटली दो. Like I think what college, engineering college teaches us कि teachers to be disciplined. I think any college कि टाइम पे एग्जाम देना, सुबह टाइम पे उठ के कॉलेज जाना, मतलब वो जो स्कूल का है, मतलब काइंड ऑफ ट्राइंग टू पुट ऑल ऑफ दैट इनटू अ मच मोर लाइटर फेज एज प्रिपेयरिंग अस फॉर दी जॉब. कि उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं पर थोड़ा बहुत कि थोड़ा मतलब डिसिप्लिन करवाना. आई थिंक इसके लिए कॉलेज का फोकस. एंड बाकी तो आपका जो है कि आई पर्सनली आई वुड हैव स्पेंट like a greater amount of my time into preparing DSA algo, not for interview but like कि चलो सीखने मिलेगा उसके बाद gradually it will help me get a job over time. But हाँ I'll just take 2 more minutes to answer this question. So if we like आज के दिन में there's this portals like hackathon, hacker earth, hacker rank, day to compete, हर एक में they offer hackathons opportunities. तो अगर किसी को प्रोजेक्ट बनाना है, कोई मोटिवेशन चाहिए तो कोई हैकाथन पे अप्लाई कर दो, उसे पैसा भी मिल जाएगा जब जीतेंगे, फिर एक कुछ ना सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा जो रिज्यूमे में डाल देंगे कि हमने हैकाथन में पार्टिसिपेट किया, प्रोजेक्ट पे बन गया कि वो प्रोजेक्ट गिटहब में डाल दो, बस हो गया. तो इससे मतलब वी नीड इफ यू वांट मोटिवेशन टू एज अ प्रायोरिटी फीचर तो हैकाथन में पार्टिसिपेट कर दो, उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट बना दो, बस हो गया. या सो सप्तर्षि दैट वाज इट. सो काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस ने बहुत सारी नई चीज़ें आज सीखी, काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता चली, मुझे तो पता चली, ऑडियंस भी बहुत कुछ आज सीखी होगी पक्का. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप सप्तर्षि से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, उनको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा. यू कैन कनेक्ट विद हिम एंड आस्क योर क्वेश्चंस. एंड वंस अगेन थैंक यू सप्तर्षि फॉर बीइंग ऑन द चैनल. Thank you, thanks for inviting me actually. Thank you so much. It was great chatting with you. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है सप्तर्षि के लिए तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप जाके लिंक्डइन पे भी उनसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको उनसे 1-on-1 गाइडेंस चाहिए तो आप टॉपमेंट पे जाके उनके साथ एक सेशन बुक कर सकते हो. सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून.